Hello and welcome to Zara Commercia. Our topic is about trade, internal trade. So it's one of the units in business studies. So what you call internal trade is all about. So first of all, let me tell you what the trade is all about. Buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country is called trade. So चीजें खरीदना या बेचना within the country या outside the country. So this is what you call a boundary. ये जो ये है, this is what you call a boundary. So this is what you call the boundaries. अगर हम कोई चीज खरीदते हैं within the country या बेचते हैं within the country या इस boundary के बाहर outside the country, that's what you call trade. So buying and selling of goods or services within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country is called trade. So within the geographical boundaries, it means J&K to Maharashtra, Maharashtra to MP, या within J&K या within state. तो इसे कहते हैं internal trade. अगर outside boundary हम जाएंगे, that's what you call external trade. So what the trade is all about, buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country is called trade. So it is the means by which people sell those goods which they do not need. So there are two types of trade. The first one is internal trade and the second one is external trade. When you talk of internal, it means buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country. That's what you call internal trade. So within the country जो हम goods trade करें, that's called internal trade. And outside the country जो हम trade करें, that's what you call external trade. So what the internal trade is, buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country is called internal trade, and both the buyer and seller belong to the same country. यहाँ पे buyer भी उसी country का होता है और seller भी उसी country का होता है. Let's take an example. Suppose I have purchased a laptop from Delhi. So I'm from Kashmir, and Kashmir is in India, and Delhi is in India. It is what you called internal trade. Agar, as compared to that, I have purchased a cricket bat from England. So England is outside the geographical boundaries of country. That's what you call external trade. So वहाँ पे seller different country का है और buyer different country का है. So as compared to internal trade, यहाँ पे buyer भी उसी country का है और seller भी उसी country का है. So internal trade, it's of two types. The first one is wholesale trade and the second one is retail trade. So ये समझने से पहले wholesale trade and retail trade, you are having a little bit concept. Wholesaler बहुत सारे goods लाता है और फिर बेचता है retailer को और retailer बेचता है ultimate consumer को. Let's talk about this chain. So सबसे पहले आता है producer जो goods बनाता है. Wholesaler, प्रोड्यूसर किसे बेचता है? ये डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचेगा, ये बेचेगा किन्हें? होलसेलर्स को. होलसेलर किन्हें बेचता है? रिटेलर को. रिटेलर किन्हें बेचता है? कंज्यूमर को. So this wholesaler act as a link between producer and retailer. So when you talk of this wholesaler, it act as a link between producer and retailer, because retailer directly goods नहीं ला सकता producer से, तो वो किससे खरीद सकता है? wholesaler से. So wholesaler क्या होता है? ये goods खरीदता है in large quantities from producer और sell किसे करता है? retailer को. अब ये retailer है, ये डायरेक्टली गुड्स किसे बेचता है? कंज्यूमर को. सो कंज्यूमर डायरेक्टली गुड्स नहीं खरीद सकता होलसेलर से, बिकॉज होलसेलर किसे बेचता है? रिटेलर को. सो दिस रिटेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड होलसेलर. नाउ व्हाट द होलसेल ट्रेड इज ऑल अबाउट. सो पहले बताओ होलसेलर क्या होता है? वो गुड्स खरीदता है इन लार्ज क्वांटिटीज, एंड रिटेलर भी लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता है, बट एज कंपेयर टू होलसेलर वो स्मॉलर क्वांटिटीज में खरीदता है. So wholesale trade, when goods are bought and sold in large quantity, it's known as wholesale trade. जब हम goods लाते हैं या खरीदते हैं, so in large quantities, that's what you call wholesale trade. A wholesaler buys goods in large quantities from producer and sells to the retailer. The serves the link between producer and retailer. So what the retail trade is, जैसे कि मैंने कहा wholesaler क्या होता है? That is a link between producer and retailer. What the retail trade is all about? Retail trade ये भी गुड्स खरीदता है मगर कम क्वांटिटी में. कम नहीं खरीदता, बट एज कंपेयर टू होलसेलर. There's a term when goods are bought and sold in comparatively much smaller quantity. I use the term comparatively. So we are comparing retail trade with the wholesaler. So comparatively much smaller quantities. So it is known as retail trade. जब हम goods खरीदते हैं या बेचते हैं smaller quantities में as compared to the wholesaler, that's what you call retail trade. A retailer buys goods from wholesaler and sells them to the ultimate consumer. ये किससे goods खरीदता है? wholesaler से. और किसे बेचता है? consumer को. Thus serves the link between consumer and wholesaler. So there are two types of retailers. Now let's talk of retailers. So
itinerant retailers or fixed shop retailers. So itinerant means traveler. Itinerant retailers और fixed shop retailers. Itinerant retailers वो होते हैं जिन्हें अपना शॉप नहीं होता, और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो होते हैं जिन्हें अपना शॉप होता है. So itinerant retailers क्या होते हैं? The retailers who do not have a fixed shop to carry out their business activities are called itinerant traders. ये वो business houses होते हैं, ये वो shops होते हैं, ये वो business house होते हैं जिन्हें अपना fixed shop नहीं होता है. So उन्हें कहते हैं itinerant traders. They move from place to place carrying goods on their heads or on the back of animals in search of consumers. So now you talk of itinerant. What's the fixed shop? वो next video में पढ़ेंगे. Fixed shop name itself depicts कि उन्हें अपना shop होगा, इन्हें अपना शॉप नहीं होता है. सो ये भी आइटिनरेंट ट्रेडर्स भी बहुत सारे टाइप्स का है. तो पहला, peddler and hawkers. A hawker moves from door to door and street to street carrying goods in wheeled carts or on the back of their animals. ये वो होते हैं जिनके या तो ये गुड्स होते हैं व्हील्ड कार्ट्स पे या on the back of their animals पे रखते हैं. A peddler moves from house to house carrying goods on his back or back. Both sells goods in small quantities of cheap prices. This is what you call peddlers and hawkers. Now the street traders. ये street traders जो होते हैं ये mainly operate करते हैं public places पे जहाँ पे busy हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, जैसे कि railway stations, cinema halls, bus stands, and masjids. They sell a wide variety of low-priced articles of daily use, such as books, newspapers, stationery, ready-made garments. So it's the month of Ramadan. आपने देखा होगा कि मस्जिद के बाहर वो होते हैं जो कि वो मिसवाक बेचते हैं, टोपिया. सो बट इट्स नॉट यहाँ पे नहीं, इस साल तो नहीं होगा, बट यू हैव विटनेस्ड जब आपने प्रीवियस रमजान में देखा होगा कि वो टोपिया बेचते हैं, मिसवाक बेचते हैं. दिस व्हाट यू कॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स. वो क्या जाते हैं, बिजी प्लेस पे जाते हैं और अपनी गुड्स बेचते हैं. दैट्स उनका अपना शॉप नहीं होता है. मार्केट ट्रेडर्स, दीज आर द आइटिनरेंट हु सेल देयर गुड्स एट डिफरेंट प्लेस ऑन फिक्स्ड डे. जैसे कि संडे मार्केट है, वहाँ उन्हें कहते हैं मार्केट ट्रेडर्स. उन्हें अपना शॉप नहीं होता है लेकिन वो किसी फिक्स्ड डे पे रहते हैं, या फ्राइडे या सैटरडे या संडे. जनरली दीज ट्रेडर्स डील इन सिंगल लाइन ऑफ गुड्स जैसे टॉयज, रेडीमेड गारमेंट्स, फैब्रिक्स एक्सेट्रा. सो मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये किसी खास दिन पे काम करते हैं. And cheap jacks. Cheap jacks hire small shops in residential localities for a temporary period. ये कुछ shops temporary period के लिए, permanently नहीं, temporary period के लिए लेते हैं. They shift from locality to locality depending on the prospects of getting business. They deal in household articles and low-priced goods. For example, 5-10 दिन के लिए ले लिया एक so what you call जो बिक्री बेचता है, मतलब ईद आई तो उसने बिक्री के लिए 5 दिन के लिए दुकान ले ली. That's what you call cheap jacks. So cheap jacks hire small shops in residential localities for a temporary period. They shift from locality to locality depending on the prospects of getting business. So fixed shops क्या होते हैं, ये वो रिटेलर्स होते हैं जिन्हें फिक्स्ड शॉप होता है टू कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज. उन्हीं को कहते हैं फिक्स्ड शॉप ट्रेडर. दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज दे आर हैविंग देयर फिक्स्ड शॉप. As compared to itinerant retailers, वो move करते हैं from place to place, but ये move नहीं करते from place to place because they are having their own shops. Now, when you talk of fixed types of fixed shop, there are small scale and large scale. The name itself depicts what the small scale is, what the large scale is. Small scale means जो small level पे हो, large scale means जो large level पे हो. The name itself depicts scope. In simple words, the fixed shop which operate at lower level are called small scale shops, and small scale retailers are spread everywhere to satisfy customer wants. अब ये भी बहुत तरह के हैं, जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप, स्ट्रीट स्टाइल, होल्डर, सेकंड हैंड गुड शॉप एंड सिंगल लाइन स्टोर्स. आई होप यहाँ तक आपको समझ आया, और जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.